Very good morning, students. Welcome to Gyanmajari Vidyapith Mahuva online digital platform. As you know, I am your science teacher Vatsal Trivedi. Or today we are discussing chemistry unit number 1, day 7. So our unit name is fabrics, chemicals and changes. जो हम लोग उसके अंदर काफ़ी सारे चीज़ हम देख रहे थे. So now today we are start day 7. So before the start today's session, let us solve one practice question number. The question number is that 6.3 on your supplementary book 14. So here the question is that give the three example each of elements in compound along with their chemical symbols. So here the first is example of element are hydrogen. We can write the capital H, oxygen capital O, and the nitrogen is represented at capital N. Then after the example of compound, so here water, carbon dioxide and common salt. So H2O, that means water. CO2, it is a chemical formula of the carbon dioxide, and the NaCl, you can see here the NaCl is a common salt, or we can say that this is sodium chloride. So here सब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6.3 आपको कवर करना है, आपको लिखना है आपकी फेयर बुक के अंदर. Now let us start. The next topic is acids. So basically acids क्या होते हैं, what is the properties, how we can identify this is acid, base और salt क्या होता है वो हम देखेंगे ये टॉपिक के अंदर. Acids are compound found in a substance such as lemon juice, terminate, curd, oranges, etc., which give a sour taste. So first thing we have, that means it has a sour टेस्ट, जिसका टेस्ट सॉर टेस्ट होगा. लेमन आ गया, टामिन आ गया यानी कि इसको इमली बोलेंगे, कर्ड यानी कि दही है. तो ये सारी चीज जो है उसकी टेस्ट के साथ हमको मिलेगा सोर टेस्ट. सो दैट मीन्स एसिड हैव अ सोर टेस्ट. So list any food items that are sour. So we can write kokum, oranges, vinegar, ketchups. All these items sour in the test. They all have acids in them. So ये सभी के अंदर acid होता है. Now the next is organic acids. Acids can be extracted from the plant or animal sources or made in the labs. The acid made from the plant or animal sources are called organic acids. जो प्लांट और एनिमल सोर्सेस में से जो कुछ भी एसिड्स बने उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स. These compounds have a carbon as one of the elements that make them. So citric acids made from the lemon, and acetic acid it is made from the barley. Acid can be made up from the minerals or inorganic substance such as are called main mineral acids. So we have two types of acid, organic or mineral. So they do not have a carbon atoms in them. For an example, hydrochloric acid, we can say that the HCl. Okay, आप यहाँ पे देख सकते हो इसके ऊपर भी लिखा है, it is a HCl. And the next is a sulfuric acid. You can see here H2SO4. H2SO4. So it is a sulfuric acid, and it is a sulfuric acid, and it is a HCl, hydrochloric acid. They do not have a carbon atoms in them because it is a mineral acids. और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या मिनरल्स में से बने हुए कोई भी एसिड्स होते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, मिनरल एसिड्स. Types of acids: first organic acid, then mineral acids.
They are mostly made from the plant and animal sources, and the mineral sources के अंदर they are mostly made from the inorganic sources like minerals or a rock. They have a carbon compounds in them and they do not have carbon compounds elements in them. Then next is they are a weak acids and they are strong acids. So that means organic acids जो कुछ भी रहेंगे वो कैसे रहेंगे, weak acids रहेंगे. And strong acids that means उसका temperature level काफ़ी ज़्यादा हमको मिलेगा. That's why it is a mineral acids का जो strong acids उसको हम बोलेंगे. Example of the organic acids vinegar, citric acids, etc. And hydrochloric acid, sulfuric acid, it is a mineral acids. So substance that are acidic have a certain characteristics or properties. तो हम यहाँ पे कुछ properties देखेंगे acids की. First, found a food item with acid in them, it is a test sour. So first is a इसका test कैसा होगा, sour test होगा. Next, they can produce the burning sensation with the touch of them or explode them. For an example, an increase the amount of hydrochloric acid in stomach and make as a feel of burning sensation in a stomach. तो उसको हम एसिडिटी भी बोलते हैं. ओके, तो दैट्स वाई उसकी जो नेचर होता है वो काफ़ी गर्म होता है. दे आर यूजुअली corrosive in a nature, which means they can damage the substance they came in contact with, especially the metals, hence they are stored in a glass containers. काफ़ी जगह पे ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ होता है कि एसिड स्किन कोड आर स्किन एज वेल एज we can must be very careful while the working with acids in laboratories or labs. Acids are soluble in a water, which means they can mix with the water easily. Then what can be uses of acids, उसके use क्या क्या हो सकते हैं. So the uses of acids, for an example, acetic acid, citric acid और lactic acid यहाँ पे है. So it is a first acetic acid, it is a found in a vinegar. Then it is used for a cooking in a cleaning. हम यहाँ पे उसका use करते हैं विनेगर का. Then citric acid, it is a orange और lemon में से वो मिलता है. We can consume in a preparing the इन कुकिंग्स के अंदर उसका हम यूज़ करते हैं. देन लैक्टिक एसिड जो कर्ड यानी कि दही में से हमको मिलेगा. सो इट इज़ अ कंज्यूम्ड इन अ फूड आइटम इन अ कुकिंग, ये भी हमको फूड में उसका यूज़ हम करते हैं. देन ऑक्सिलिक एसिड वो स्पीच में से मिलता है इन कंज्यूम्ड एज अ फूड आइटम. देन लास्ट वन, फिफ्थ वन इज अ एस्कॉर्बिक एसिड, वो हमको आंवले में से मिलता है, आंवला जो हम होता है. So यहाँ पे भी as a food item we can use it. And that last is tartaric acid. So tartaric acid is a terminate grapes और and the unripe mangoes में से हमको मिलता है और वो भी हम as a food item उसका हम use करते हैं. So now let us summarize that acids are compounds that have a specific properties which as they are sour taste, burning sensation होता है, corrosive होता है, soluble पानी के अंदर होता है. Then they can be organic और mineral हो सकता है. Organic acids जो कुछ भी होते हैं वो plants और animals में से बने होते हैं. और then after the mineral acids जो कुछ भी होते हैं वो जो मेन मेड होते हैं और मिनरल्स और कोई कंपाउंड्स के अंदर से हमको बने होते हैं. फॉर एन एग्जांपल उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड से यानी कि H2SO4 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो यहाँ पे HCl है. ये सारे मिनरल और इनऑर्गेनिक सोर्स में से बने होते हैं. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ मिनरल एसिड्स. Now the next solve the practice question number 7.3, 4 and 5. So let's solve it. List two properties of acid on your SB 16 7.3. Acid have following properties. It is can test sour. Acids can produce the burning sensation on touching.
They are usually corrosive in a nature that we are already discussed, and they are soluble in water. So you can write any two properties, or you can write also four properties also. Next question 7.4. The correct way of making solution of acid and water is to add water in acid, add acid to water in small quantities, mix acids with the water together, give a reason of your choice. So first we are select the correct option. So add acid to water in small quantities. Why? Because we add acid to water in a small quantities when water is mixed with an acid, it generates a lots of heat. जब उसके साथ मिक्स करेंगे तो वहां पे काफी हीट जनरेट होगा. The heat can be split up the whole solution. Hence we must add the acid to water in a small quantity and stir it continuously and allow the heat produced to escape. And the last is, in which of the following pairs do both substances contains acid? So यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए. फर्स्ट ग्रेप्स इन लाइम वाटर, विनेगर एंड शॉप्स, कर्ड्स मिल्क एंड मैग्नीशिया, कर्ड्स एंड विनेगर. किसके अंदर एसिड रहेगा? So the correct option is D. Curd and vinegar is a correct option. Now the next topic is a base. So basically bases are compounds that are substance such as a soap, baking soda, limestone, etc. They have a bitter taste. एसिड का सो टेस्ट था, इसका टेस्ट बिटर टेस्ट होगा. फॉर एन एग्जांपल सोप है, बेकिंग सोडा है, लाइमस्टोन है यानी कि चूनानो पत्थर जो આપણે કોમન લેંગ્વેજ માં કહીએ. So it is a limestone. So these all are have a bitter taste. So that means ये सारे के सारे अंदर क्या होगा? बेस अवेलेबल होता है. So base are compounds and found in a substance that the soap, baking soda, limestone, etc. and they have a bitter taste. So soap com in chemical is sodium hydroxide. Then baking soda sodium bicarbonate and the limestone यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट उसको हम बोल सकते हैं. अभी हम प्रॉपर्टीज की बात करें. सो बेसिक हैव अ सर्टेन केमिकल प्रॉपर्टीज और अ कैरेक्टरिस्टिक. So it is first is a items with base in there them a टेस्ट बीटर. तो जिस चीज के अंदर बेस होगा उसका टेस्ट कैसा हमको मिलेगा? बीटर टेस्ट होगा. फॉर एन एग्जांपल बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सॉप्स है. देन दे आर स्लीपरी एंड सोपी टू टच. उसको हम टच करेंगे तो स्लीपरी या सोपी रहेगा. फॉर एन एग्जांपल आप बेकिंग सोडा ले लो, सोप ले लो, ग्लास क्लीनर ले लो, उसको एमोनियम हाइड्रोक्साइड से वो जो बना होता है वो सारी चीज सोपी यानी कि उसके अंदर जो फीन बनता है या एकदम चिकास वाળું હશે, ચીકણું હશે, સ્લીપરી હશે. Strong base can corrosive too, which means they can damage to the substance they came in contact with. Hence, they are stored in a glass containers. Now next, if the base can be corrosive, then which does shops do not corrode our hands. So हमारे हाथ को यो क्यों corrode नहीं कर सकता? So soaps does not corrode in our hands because it is made up from the dilute solution. So sodium hydroxide, dilute solution of sodium hydroxide. So it is not very strong and to hurt our hands. ये रीजन आपको याद रखना है. Next property is base may or may not be soluble in water. For an example, salt is soluble in water whereas limestones are not soluble in water. तो कोई कोई ऐसे बेस हो गए वो पानी के अंदर वो soluble हो गए और कोई कोई नहीं भी हो गए. What can be uses of bases? उसका use क्या होता है? So let us see. So calcium hydroxide इसको वो कहाँ पे ऐसे हमको मिलेगा? It is found in a lime water. It is used in a plaster, cement,
इन बिल्डिंग्स और सीवेज ट्रीटमेंट, वहाँ पे उसका हम यूज़ करते हैं. सोडियम बाइकार्बोनेट we can found in a baking soda. It is used for a baking, cooking and the cleaning of सिल्वर. सिल्वर यानी कि जिस सिल्वर से जो कुछ भी ऑर्नामेंट्स होते हैं उसको हम बेकिंग सोडा से साफ करते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें वो हमको सॉप में से मिलता है. इट इज़ यूज इन बाथिंग और क्लीनिंग. हम नहाते समय जो कुछ भी सॉप्स या कि जो साबुन का यूज़ करते हैं वो साबुन सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस होते हैं उसमें से बना होता है. So here we are discussed on the what is the acid, what is the base and what is their characteristic or properties and when they are where they are used. ओके और वो कहाँ से हमको मिलते हैं वो सारी चीज़ आज हमने देखी है. सो आज के ये लेक्चर के अंदर हम यहाँ तक रखेंगे. यहाँ तक आपको जो कुछ भी डाउट्स है सो यू हैव टू आस्क. आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट. एंड टुडे that we are solve some practice question number, so that all question number that we are discussed that we are solved in this lecture. So you have to write in your file book with the proper handwriting. Then after click the photos of the today's question and submit as a homework. It is compulsory. So now today we are stop here. So now stay home, stay happy, stay home, stay happy. Thank you very much. Bye bye. Take care. Fun with science. Enjoy the science.